Hello student, this is Rahul sir and I welcome you all of you in English class. Today I am going to explain you about the sentences and what are the uses of the sentences and what sentences and where it would be used and which condition you can say it is a sentence and what are the way of writing the sentence and what are the way of getting the understand about the sentences. So we will learn and understand the chapter sentences. Okay, let's start. Sentences. What is the definition of the sentences? Sentences. A sentence is a group of words that makes a complete sense and it contains verb and subject. This is a new book. I have many friends. What does it mean and what sentence wants to explain itself? सेंटेंस अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है और ये बता रहा है कि सेंटेंस जो होता है सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स का एक समूह होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस को बनाता है. एंड इट कंटेंस वर्ब एंड सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, तभी वो सेंटेंस हो सकता है. यानी कि किसी भी सेंटेंस को प्रॉपर वे में जब अरेंज करते हैं तब जाके वो सेंटेंस बन पाता है और विच गिव्स अ complete sense, then we can say that is a sentence. This is a new book, it means यह एक न्यू किताब है जो कि क्लियर हो रहा है इसके फॉर्मेशन से, इसके स्ट्रक्चर से कि हाँ ये सही वे में इसको लिखा गया है. नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल. आई हैव अ मेनी फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल्सो इन द प्रॉपर वे, दैट्स वाई वी कैन से it is a sentence. Now some features I'm going to explain you about the sentences which is required to be a sentence, correct sentence. First one is a sentence is a group of word that makes a complete sense. It means it is a clear कि वैसा sentence जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और कंप्लीट सेंस देता हो. यानी कि व्हेन वी रीड एंड व्हेन वी आर गोइंग टू लिसन द सेंटेंस एंड दैट इज इन द करेक्ट वे एंड दैट इज इन द फॉर्मर वे, देन वी कैन से दैट इज अ सेंटेंस, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सेंटेंसेस. दूसरा पॉइंट है इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. सेंटेंस का पहला है कि इसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. नाउ कम इट एंड्स विथ फुल स्टॉप. इफ़ इट स्टेट्स अ फैक्ट, अगर कोई फैक्ट को बता रहा है, अगर कुछ फैक्ट लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप से उस सेंटेंस को एंड करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क. इफ़ इट आस्क क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सेंटेंस से तो उसको उसके अंत में क्वेश्चन मार्क होगा. और एन एक्सक्लामेशन मार्क्स, अगर किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग का एक्सप्रेशन है तो उस तरह के फीलिंग्स के लिए हम क्वेश्चन मार्क्स एक्सप्लेनेशन मार्क्स को एक्सक्लामेशन मार्क्स करते हैं. इट इज़ एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और सरप्राइज, जॉय एंड सैरो. यानी कि एक्सप्लेनेशन मार्क्स का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कुछ सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो, सौरों को एक्सप्लेन करना हो या कोई तरह का सरप्राइज हो, तो वैसे के लिए हम एक्सप्लेनेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं. तो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम सेंटेंसेस चैप्टर इन विथ डिफिनीशन. तो सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड इट कंटेन्स वर्ब एंड सब्जेक्ट and it starts with capital letter, it ends with full stop, questions mark, exclamation marks. Okay, now here is the exercise which you will have to solve. First, rearrange the following words to form a meaningful sentences and use the capital letter, full stops, questions mark and exclamation marks as required. The first has been done for you. In the next page, yes, come to the first example. When we read this one, Buzzards was Jan yesterday's house. Yesterday house. When we read this sentence or when we listen this sentence, we are not going to get the proper meaning of that very sentences. So it is not called sentences. So you will have to arrange these sentences in the proper way. Starts with Jane's. Now I have solved it. Jane's house was buzzards yesterday. Now it gives the some meaning and some sense, that is called sentences. So you will have to arrange 2 3 4 5 and 6. There are the some sentences and here is the some instructions is given you. Start with James, in the third starts with who and start with Einstein's, starts with what and start with it, and these are the 2 3 4 and 5 6 which you will have to solve yourself. Now next point is kinds of sentences. There are 4 types of sentences. First one is declarative sentences, second one is imperative, third one is interrogative and fourth one is exclamatory sentences. And what are these all? Now explain in the next page. Yes,
डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं इसको, दोनों सेम ही होता है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव. इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. इन explanation what is written here, a sentence that declares or states the something इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ऐसा सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर करता हो या कुछ कहता हो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, या दो तरह के हो सकते हैं, एक अफर्मेटिव हो सकते हैं और दूसरा निगेटिव हो सकते हैं. यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कोई स्टेटमेंट्स को पास आउट करते हैं या कुछ कहते हैं, तो वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. नाउ कम टू व्हाट इज अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंसेस अ फॉर्म अ प्रोपोजिशंस को अफर्म करता है, जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, ये कन्फर्म करा रहा है कि ही गोज़ टू स्कूल, ये असर्टिव सेंटेंस के रूप में आ रहा है. द स्कूल रीओपन्स टुडे. स्कूल द स्कूल रीओपन्स टुडे, स्कूल या आज खुलेगा या खुलता है, कुछ ऐसा है. नाउ निगेटिव सेंटेंसेस negate a propositions. Example, he cannot dance. It means we are talking about the negativity. He cannot dance, that's why its sentence is a assertive sentence, but it comes under the negative part. She is not well. It means here also not is used, that was she design the sentences from the group of negative sentences. Come to solve out these examples and this exercise. Answer these questions, then write whether it is affirmative or negative. The first one has been done for you. First question here, do you study in college? Then you will have to answer it, I don't study in college. It means it is a negative. Now you will have to solve by yourself. Second question, number second, which is your favorite subject? Now write your answer and write and state which is it is a negative or positive. So question is there, one I have solved for you. Now second you will have to, and third, fourth, fifth and sixth you will have to, there is a question written and you have to write the answer and then states it is in which form, negative or affirmative sentence. Okay.